was wrong to say. I wouldn't change a thing, 'cause in the story of our lives, the best of times through color glass. Time. Hello, welcome to Amor. Amor is you, Amor is me. So let's spread little love during this Pujo season. Your pal is back with another glam look. So as you can see that I have created a very glam out look. So almost it is not as difficult as you are seeing it. So I have tried to segregate this look very easily for you. So let's see how I have created this glam sort of makeup look. First of all, you all know that skincare is very important before a makeup. So today I will not do a very glam look. It's a very simple but yet a very date sort of look. Like you can go out with your boyfriend and like you can have this look carrying out. So let's see what I create. So for that we will be using the Biotique toner. You can see almost I have finished up. Like make sure you don't drag your toner, you just press it in your skin. I will be using a Good Vibes serum. I am using the lemongrass serum. What it will do, it will instantly plumps my face. Like this winter, as we all know that winters have already approached. So it's important to take care, like you have to layer your skin with moisturizers, serums so that the oils be with. So now you can see that I am just pushing the serum in my skin. I'm not just dragging it, just pushing it. So after that I'm using my moisturizer. So I am using this Pond's moisturizer. You can see that how much I went, like almost it's getting emptied. So I will be applying it in my face. So now we will be doing our base. So for that we will be applying this Lakme 9 to 5 Prime Plus Matte Foundation. My shade is Cool Rose. I love this Cool Rose sort of tint in my face. Like मुझे कुछ भी रोज टोन वाले जो कलर, इवन मुझे रोज उतना पसंद नहीं है, बट आई लाइक दी रोज टोन के जो फाउंडेशन होते हैं या फिर आपके हाइलाइटर्स होते हैं, आई लव देम. सी आई एम नॉट यूजिंग एनी ब्यूटी ब्लेंडर, आई एम जस्ट यूजिंग माई हैंड्स. आई विल शो यू. लाइक सबके पास तो ब्यूटी ब्लेंडर वगैरह ब्रश होना लाइक नहीं होगा. हियर आल्सो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू जस्ट प्रेस योर फाउंडेशन. आपको अच्छे से फाउंडेशन को प्रेस करना है आपके स्किन. ब्यूटी ब्लेंडर को आप क्या करते हो, यू हैव डैप डैप करते हो, तो यहाँ भी आपको अपने फाउंडेशन को डैप मोशन में यू हैव टू अप्लाई. डोंट फॉरगेट योर नेक, ईयर्स टू, इवन योर बॉडी पार्ट्स आर आल्सो सीन ना ओवर हियर. तो आप इसको थोड़ा सा यहाँ तक लेके जा सकते. आई एम यूजिंग दिस स्टे क्वर्की का कंसीलर. जहाँ जहाँ मेरा मार्क्स है आई विल अप्लाई. तो विंटर्स आ गया ना, तो आप कुछ भी ज्यादा लेयर लगाओगे और आपका जो क्या बोलते हैं, आपका स्किन यदि ड्राई होगा ना तो वो थोड़ा फ्लेकी हो जाता है. सो इसीलिए मैं बोलती हूँ कि आपको बहुत अच्छे से यू नो आपका फेस मॉइस्चराइज और वेल ऑयल वगैरह से यू हैव टू कीप इट वेरी वेल हाइड्रेटेड. सी आई एम हियर नॉट यूजिंग एनी स्पंज, नथिंग, ओनली विद द फिंगर्स. सी तो ये कंसीलर जो है ना बहुत बजट फ्रेंडली कंसीलर है, बट एक ही प्रॉब्लम है इसका, यू हैव टू बी वेरी क्विक, नहीं तो ये बहुत ड्राई हो जाता है. सो अगेन आई एम टेलिंग, आई एम नॉट अ मेकअप आर्टिस्ट और समवन हु इज लाइक प्रो इन डूइंग मेकअप. इट इज हाउ आई डू इट. लाइक सो नाउ व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू कंसील द एरियाज वेयर जहाँ पर हमने कंसीलर लगाया हुआ है, सो दैट कि हमारा जो कंसीलर है वो मूव ना करे. और हमको अपना फेस को सेट करना है. क्योंकि मेरा फेस बहुत ही ड्राई है तो आई विल डू इट अकॉर्डिंगली. मैं ज़्यादा सेट नहीं करती हूँ अपना फेस को क्योंकि बहुत ड्राई हो जाता है. सो आई हैव यूज्ड दिस वेट एंड वाइल्ड मेगा ग्लो contour palette. So you have this contour shade as well as this highlighter. Now I will be doing my eyebrows. For that I am using this Etude House eyebrow pencil. So you have this spoolie as well as your pencil. So first of all मैं इसको comb करूँगी like my eyebrows को. So make sure कि आप इसको like एकदम straightly नहीं करना, like straight comb नहीं करना. You have to do it at an angle at a 45 degree. Like now with this pencil part I will draw two lines.
यू फिल दी आईब्रोज और आप इसको कोम करते रहो सो दैट जो प्रोडक्ट है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए आपके आईब्रोज में. सो नाउ आई विल बी डूइंग माई आई शेडो पार्ट. सो फॉर दैट आई एम यूजिंग दिस पैलेट, Revolution palette. So I will be doing my transition color, like crease line mein we will be applying a color. Make sure you take less color. So we will be taking a dark skin tone, like हमारे जो skin color है उससे थोड़ा dark skin tone color, थोड़ा सा depth create करेगा, थोड़ा transition shade लाएगा. So after that I will be taking a blue color. So now we will be applying a light pink shade to give a transition. Because I am wearing a blue dress, तो blue dress के साथ pink eyes goes very well. So I am not doing a very fancy look. तो ज़्यादा कुछ tough नहीं कर रही. Make sure you blend the colors very evenly. बहुत अच्छे से blend करना है. तो हमको स्मूदन आउट कलर करना है, बहुत स्मूथ लगे हमको अपने कलर्स. तो नाउ आई एम टेकिंग अ ब्लू शेड, देन आई एम अप्लाइंग इट इन द इनर कॉर्नर एज वेल एज आउटर कॉर्नर ऑफ माय आईज. So now we will be applying a purple shade in the outer corner of eyes. So now I will be doing a little cut crease over here. For that I am using this Swiss Beauty. Take a flat brush. आपका जो cut crease है मैं हमेशा बोलती हूँ it should be very clean. This shade I have not dabbed any powder because मैं देखी हूँ कि पाउडर लगाने से उतना पिगमेंटेशन मेरे से नहीं आता है. So I am taking a shimmery shade. See, I have applied the area जहाँ पर हमको पूरा the color has to be put in. The same thing we will be doing in the, like we are applying the lower lash line maybe. So I will keep this eye set and I will do the another eye. So I'm quickly applying a lipstick. So I'm almost done with my makeup. So I've applied the lipstick. If you see that your edges are not clean, you just take a concealer. You have to just clean the edges. Now I will be applying blush. So I am using the Kareena Kapoor Khan Collections blush. See, I am taking a little. So now I will get back to my eyes. So for that I am using the Wet n Wild purple eyeliner. Applying the mascara from Wet n Wild. So now I will be applying the falsies. So I am using this Pack 53 eyelashes. So I have in the hand. So I am applying this Miss Clear glue. This is a dark tone glue. So make sure that you apply the glue in the ends. ज़्यादा करके आप ends में ज़्यादा करके लगाओ. Because हमेशा end की तरफ से ही वो निकलने शुरू हो जाता है. I've worn the eyelashes and I've completed the look. So I've created a very glam sort of look. So I've done with my eyes. Then I got remembered that I've forgotten to apply the highlighter. So I am using this palette from Sugar to apply my highlighter. Lower lash line में I have not applied much color. तो lower lash line में भी मैं थोड़ा सा ये कर देती हूँ, लाइक इंटेंसिफाई कर देती हूँ.
So in the lower lash line, I have completed the eye. So then I'm using this plum kajal and I will just apply it in the outer corner of my eyes. Just that's it. उससे ज़्यादा मैं नहीं लगाऊंगी. And now you have to smudge this color. So with that, I have completed my full glam makeup look. So I hope you're gonna like it. So if you like my video, don't forget to give a thumbs up. And don't forget to like, share and subscribe to my channel. And give lots of love. I'm loving it, feeling it, touch me and being it, see what I see in it. I'm typical, messing around with it, mix it up, go with it, flow with it, let it all go. Oh Lord, think you know what I'm like, but you don't fall, you lose control. Bittersweet melody when I dance on your fly.